The first question arises, what is a research problem? कि research problem होती क्या चीज है? और अच्छा, let me know you कि research problem and research question are same thing. Research problem and research question दोनों एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. What is this? It is a question to which a researcher seeks an answer. कि साहब प्रॉब्लम क्या ये बताओ ना, मैं सॉल्व करूंगा. तो वो प्रॉब्लम है, दैट इज द रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, इन द अर्ली इरा ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड. जैसे मैंने आपको बताया था कि आदिवासी जब थे, व्हाई वी स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स, बिकॉज उनको दैट वाज द एज ऑफ आइस एज इरा. तब बहुत ज्यादा ठंड होती थी एंड उनके जो शरीर के बाल थे वो गिरने शुरू हो गए, जिसकी वजह से दे वर फेसिंग many problems. So this was a research problem and we searched a solution for it by, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एनिमल्स का स्किन था उसको उससे अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया. जो पत्ते थे पेड़ों के उससे अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया. धीरे धीरे दे इन्वेंटेड कॉटन, फिर उससे क्लोथ्स बने, फिर उससे जैकेट्स बने. राइट? ऐसा ही हुआ ना, पहले हम ऐसे दिखते थे, देन धीरे धीरे एडवांसमेंट होते आज हम यहाँ पे पहुंचे. सो प्रॉब्लम क्या थी उनके सामने कि सर ठंड लग रही है एंड वी नीड समथिंग टू कवर आवर बॉडी. सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी वहां पे? हाउ टू सेव द बॉडी फ्रॉम कोल्ड इन द एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर. हाउ टू save our body. Okay, let me give you one real life example. I have been to Ellora caves in Aurangabad. वहां पे मैंने क्या देखा? This Buddha temple. There are 32 caves segregated into Buddhist caves, Jainism caves, Hinduism caves. तो उसमें उन्होंने क्या किया स्कल्पचर्स ने कि माउंटेन्स को उन्होंने क्राफ्ट करके वहां पे टेम्पल्स बनाए हैं, कि माउंटेन को तराश के टेम्पल्स बनाए हैं. ये आपको एक एग्जांपल दिखाया मैंने, वहां पे बुद्धा जी का टेम्पल था, तो उन्होंने माउंटेन्स को तराशा और उसको ये शेप दिया. अब आप इनको देख के पहचान सकते हैं कि इन दैट इरा सी इनके बॉडी पे बहुत कम क्लोथ्स हैं. दीज आर दी फाइंडिंग्स. इनको हम देख के समझ सकते हैं कि उस जमाने में शरीर पे बहुत कम कपड़े डाले जाते थे. इवन की आर मेनी ऑफ द लॉर्ड्स लॉर्डेसेस इन हिंदू एज वेल, अगर हम पुराने जमाने में देखें तो वो भी ऐसे रहते थे. फिर उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इंसानों को कि साहब ठंड लग रही है, कुछ करो प्लीज. तो उससे फिर हमने क्लोथ्स को इन्वेंट किया. तो दैट वाज अ रिसर्च प्रॉब्लम. मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू कि साहब सबसे पहले प्रॉब्लम होगी तभी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे ना. प्रॉब्लम होगी तभी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे उसका. अगर मैंने अभी भी पानी पिया, व्हाई? क्योंकि मेरी बॉडी को नीड थी पानी की. my mind was asking कि पानी चाहिए and I just pick the bottle and have water. So problem क्या थी कि प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दो, और इस पानी ने मेरी प्यास बुझाई. that was the solution. मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अभी एक और एग्जांपल, हमने जो फर्स्ट क्लास में एग्जांपल लिया था मैगी का, दैट योर ब्रदर इज आस्किंग यू फॉर द मैगी एंड आपने उसको मैगी बना के देनी है, बट आप उससे क्या पूछेंगे? आप उससे पूछेंगे कि मैगी क्यों खानी है? ही टोल्ड यू कि मुझे भूख लगी है. नाउ आपने मैगी उसको बना के दे दी, मैगी बना के दे दी. अब एज्यूम करना, जस्ट एज्यूम कि जिस जमाने में हमारे ब्रदर ने हमसे मैगी मांगी, हमने उसको मैगी दी, उस जमाने में फॉक्स नहीं होते थे, सिर्फ स्पून होते थे, फॉक्स नहीं होते थे. अभी आपके ब्रदर को क्या प्रॉब्लम आएगी? हाउ टू ईट मैगी स्मूथली, क्योंकि वो बहुत गर्म है, दैट इज वेरी हॉट, और उसको खाने के लिए प्रॉपर यूटेंसिल नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक स्पून है जिसके अंदर की वो मैगी नहीं आ रही है. बट he needs a utensil, a fork like this, जिससे कि वो मैगी को इजीली
खा सके। So here I am discussing you. See, जब fork नहीं थे हमारे पास, see this was the spoon of earlier era. पहले spoons ऐसे दिखते थे. See the type of structure it has. पहले spoons ऐसे दिखते थे. After then we started problem कि यार जो गर्म चीजें हैं, जो noodles type चीजें हैं, how to eat them. धीरे धीरे forks का इन्वेंशन हुआ। सी अभी हम कटलरी खाते हैं ना, कटलरी की ऐसा स्पून भी होता है, फॉर्क भी होता है, नाइफ भी होता है हमारे साथ, ऐसा वाला। लेट मी चेंज माय पेन कलर। अभी कटलरी हम खाते हैं तो इस टाइप का खाते हैं, बट ये कैसे आया? स्टार्टिंग में सिर्फ स्पून था इस टाइप का, बाद में इस टाइप का कटलरी भी बना। सी दिस इज द नाइफ एंड दिस इज द फॉर्क। फिर ऐसा भी बना, these are the forks of earlier eras, कि ऐसे forks बने। फिर spoon and forks, see कैसे एक ही के अंदर spoon और forks इन्होंने लाए हुए हैं। And after then काफी inventions के बाद, काफी problems face करने के बाद, finally we came up with this fork, spoon and cutter, knife. I mean to say कि साहब इनकी भी प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ, जिस चीज को इन्होंने सॉल्व किया। इनकी भी प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ, जिसको इन्होंने सॉल्व किया। Getting my point? Telephone story I shared with you. I shown you the video of Graham Bell. This is the first prototype, ऐसा फर्स्ट मोबाइल फोन दिखता था। साहब इनकी भी प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम थी कि जो हमारा फोन है ये हर कोई अपने घर में नहीं रख सकता है, ये फोन बहुत बड़ा है, प्लीज इसको छोटा किया जाए। धीरे धीरे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते 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 वी रीच टू लैंडलाइंस, देन वी रीच टू cell phones, then we reach to cell phones. Okay, just think that we are not in the digital era. Just think, हम पुराने जमाने में हैं, हमारे पेरेंट्स के जमाने में। आप कैन यू थिंक ऑफ कि सी आप लोग अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र, कोई वेस्ट बंगाल, कोई कैलकाटा, अलग अलग जगह बैठे हैं हम, and how easily we are able to interact with each other. See, if someone is sitting in Mumbai, मुझे ट्रेन से जाने में वहां पे 1.5 दिन लगता है, ट्रेन से जाने में, but now we can connect within a second. अभी आप सोचिए, we don't have this technology. This is the problem कि मैं अपने रिश्तेदार को जो बहुत दूर रहता है नहीं बात कर पा रहा हूँ। नहीं, let us say my parents are staying in Mumbai, I am staying in Punjab. अभी पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। So मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा, मुझे जाने में 1.5 दिन लगेगा, 1.5 दिन आने में लगेगा। कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। कोई भी मैसेज है, कोई प्रॉब्लम है, मैं उनको कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कबूतरों को भेज रहा हूँ कि प्लीज उनका हालचाल पता करके आइए। वो चिट्ठी लेके जाते हैं, फिर गाने आते, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये सब प्रॉब्लम था कि सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, हम नहीं एक दूसरे के बारे में पता कर पा रहे हैं फटाफट से। धीरे धीरे नेटवर्क केम्स इनटू अकाउंट, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G। प्रॉब्लम थी ना वो भी तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो रहे हैं, उसके टेक्नोलॉजी गिविंग अस द सॉल्यूशंस इन द सेम वे। मैं ये सब बातें जो आपको बता रहा हूँ, इसका एक ही रीजन है, ये बताने का कि सर जो आप रिसर्च करोगे, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आपकी प्रॉब्लम असली होगी। लेट अस से मुझे एक लीव चाहिए डिपार्टमेंट से, आई एम गिविंग एन एप्लीकेशन कि सर आई एम हैविंग फीवर, सो आई नीड अ लीव, दिस इज द रियल प्रॉब्लम आई हैव। बट लेट अस से मुझे कोई फीवर नहीं है, मैं झूठी प्रॉब्लम बना रहा हूँ कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए। अभी झूठ बोला ना तो टेंशन रहेगी कि कोई देख ना ले, झूठ बोला तो याद रखना पड़ेगा कि कल को किसी ने पूछ लिया तो। ऐसे ही अगर आप सच की रियल प्रॉब्लम लाएंगे तो आपको रिसर्च करनी, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मैं कुछ का सॉल्यूशन निकालूं समाज के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए, आई शुड ब्रिंग समथिंग न्यू। बट अगर फेक प्रॉब्लम होगी, आपके माइंड खुद कहेगा यार नकली काम तो है, क्या कर रहा है, ऐसे कर लेना है इसको।
This happens with our researchers. अगर फेक रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा. आई अंडरस्टैंड जो लोग अभी भी स्टार्टिंग रिसर्च में है या फिर जिन्होंने एंटर करना है पीएचडी में, वो सिर्फ एडमिशन लेने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं, बट आफ्टर देन दे फाइंड आउट कि यार दे आर लूजिंग इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 months, बिकॉज उनका माइंड उनको बार बार बोलता है कि दिस इज नॉट द रियल रिसर्च प्रॉब्लम, इससे कुछ नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो दैट इज नॉट रेलेवेंट. तो ये जड़ है साहब, अगर जड़ अच्छी होगी पेड़ की तो पेड़ अच्छा होगा डेफिनेटली. तो जड़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. आई विल लेट यू नो हाउ टू फाइंड अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड अ रियल रिसर्च प्रॉब्लम, बट वो आपकी अच्छी ही होनी चाहिए. Here we comes research problem in the academic context. So I discussed कि research problem होती क्या है. It is a gap, it is a challenge that needs to be addressed through the research process. Yeah, in the first class I told you research is a process. It is a systematic process. So उस systematic process के through आप जो चीज solve करेंगे, that is your research problem. A research problem is a question or problem that a researcher seeks to answer through their study. अच्छा, ये आता कहाँ से ऐसा research problem? It typically arises from a gap or deficiency in the existing knowledge base. So gap से आता है. अभी gap find out कैसे करते हैं? We'll let you know. But ये बता रहा हूँ कि research problem होती क्या है. It should be clear. We will take example कि clear research problem और unclear research problem कैसे होती है. Should be specific, should be feasible. मैंने जो आपको कल ये दिखाया था एक item, this cigarette, we will take this example and let you know how it should be feasible. Feasible का मतलब होता है साहब कि आपकी रीच में है, आपकी औकात में है उस चीज को करना. लेट अस से मैं बोलूं कि मुझे ट्रेन खरीदनी है and I am earning a salary of, let us say, 1 lakh a month. Sorry, it is not feasible for me. Yes, for Mr. Ambani, it is feasible. So, आपकी औकात के अंदर हो, कहने का मतलब जितना टाइम है आपके पास, जितने रिसोर्सेज है आपके पास, जितनी एनर्जीज है, उन सब के उस दायरे के अंदर आप उसको अचीव कर सकें. That should be a feasible one, and should be grounded in the relevant literature and theoretical frameworks. कि वो कुछ frameworks, कुछ basic, कुछ theories इनके ऊपर established हो. This is the most important point. It should also be significance and the relevance to the field of study and have potential to the advancement of knowledge. भाई मैंने बात बोली कि अगर असली प्रॉब्लम होगी तो वो सोसाइटी में कुछ एडिशन करेगी. यही आपका एक सोर्स है अपनी पीएचडी में इंटरेस्टेड रहने का. यही आपका सोर्स है पीएचडी में इंटरेस्टेड रहने का. Ways to find a research problem. अब अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है कि अच्छा पहली बात तो देखें कि तरीके क्या क्या हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के. This is the most used method of finding a research problem, that is literature review. Literature means जितनी भी studies, जितनी भी चीजें आज तक हो चुकी हैं, that is the literature, and review means उन सब चीजों को देखना, पढ़ना, समझना and to extract something कि इसमें क्या चीज नहीं है. I am showing you example. मैंने आपको बोला था that you can connect with the professors through LinkedIn. I am showing an example कि how I connected to an IIT professor before entering into PhD and what he guided me on this. I am showing you an email which he has shared with me. I'm showing an email. Yes. So this is the name of the professor from IIT. See, Indian Institute of Technology, Delhi Department of Management Studies, P. Vigneshwara, PhD. Hope my screen is visible to you guys. Is my screen visible to you? Sir, could you please maximize it a bit? I mean, we're not able to. Sure, ma'am. Now? Perfect. Okay. See, this mail, this is the reward I have received from Vigneshwara Ilavarasanan P. He is an assistant professor
in Department of Management Studies, IIT Delhi. I do the same mistake which most of the researchers do in the starting. I just send him a mail. That's I am a research scholar. I want to start my PhD. Could you please suggest me some topics which are interesting in the field of mobile banking? This is the mail I have given right into him. He reverts me. Hi Saurabh, this is what I send to people in early PhD as well. Your mail is looking at shortcuts, asking experts to suggest a topic rather than working hard to find yourself. But this is what we seek in the starting of our PhD, because we are confused what to do. That's why we asked experts, please sir, suggest me a topic. सर मुझे कोई टॉपिक बताइए, किसी दोस्त को बोलते हैं कुछ टॉपिक सजेस्ट कर दे यार, मुझे कुछ करना है पीएचडी में. But we don't do hard work to find that topic. Spoon feeding should not be done for PhD. Have fun and best of luck. Here with this, he has shared me this article, starting PhD. I will just give you a crux of this article, what he has shown me here, and what process he has told me to follow. Same thing which we have discussed, that please open see, he has given me the links of top 50 journals in this context. Top 50 journals in this context. First, find out whether prior research has been done in this area. Please think of a Venn diagram. You are interested in the intersection area. If yes, then further go for the literature review. He has shared me the databases of Scopus, Science Direct, ProQuest, Emerald, Google Scholar, which we have shared with you. And then he has told me that if you need any access, I can give access to IIT Delhi for weekends if required. I told you to connect with the professors, to connect with the friends for having the databases of good universities. So he was ready to share me that database. So what I'm telling you here, that you first note down the top 50 journals in your area, in your discipline. I am sharing my screen and let you find out how to find top 50 journals. This is the Google Chrome. Here, let us say I am a law student. Top 50 journals in law. Okay, this is a Schemago ranking. Yesterday we discussed Schemago. Law journal rankings. There are a lot of universities which also give rating to the journals. Top journals in law. So here, let's say I am opening this one. Hope it's visible to you guys. Now there are a lot of journals in the law which I can see here. See, we have discussed H index, we have discussed impact factor. He has given some index of TCQQ which is relevant in the law perspective. Let us apply the filter of impact factor, because we all are aware of impact factor. Okay, fine. This is the impact factor. We discussed yesterday, impact factor means the average of 2 years citations as well as the number of articles published. And we know the journal jiska impact factor zyada hoga, that is a very good journal. Here the highest impact factor is 6.03. एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, you will find these journals in the ABDC list. You will definitely find these journals in the ABDC list. I am searching these journals in the ABDC list of 2022. You will definitely find it, and that too in the A star. See, Control F, Harvard Law Review. Yes, this is here. You can see Harvard Law Review, A star category. A star category. Let's search the second one, Yale Law Journal. I am finding this one. Yes, this is in the list. A star category. A star category, sir.
So what I'm telling you, that's why I referred you to the ABDC list. And I have given the hyperlink in the PDFs I have shared with you, uploaded in the application. Please find the top journals in your areas. And you see here, just give me a second. Okay, let us say I am in the area of mathematics. Top 50 journals in mathematics. Okay, Schemago ranking best mathematics research journals. I'm opening this one. See, impact score. We know the impact score. And we also know the journals with high impact factor, impact score are the good ones. So these are the top 50 journals. And you see, we discussed the top publishers yesterday. LC, the publishers. Elsevier, Springer, Elsevier, Wiley, CM, MDPI, Springer, Wiley, Springer, Taylor and Francis, Oxford, Springer. These publishers we discussed yesterday that these are the top publishers. Ki malai ye sare hain. And see, for mathematics, there are a lot of streams. Let us say I am in chemistry. Yes, I can search for it. These are the top 50 journals in chemistry. And again, back to, okay, law and political science. These are the law and political science. Again, see, Wiley, Cambridge, Wiley, Taylor and Francis, publishers are most same. Here you can refine your research areas. The first step to note down, to get to your research gap, is to define your area first. See, law is a very broad area. Human rights, human migration, general law, international law, criminal law, ethics. Which area you want to define? Let us say I am going for international law. So these are the top 50 journals in the international law. There are publishers. A lot of publishers are here, and they all are good publishers. In the same way, let us say I'm in mathematics. So in mathematics, please first narrow down your research area: algebra, applied mathematics, computational mathematics, discrete mathematics. There are some scholars in our group who was telling that, please, I want to know about the research area. So, ma'am or sir, please first select your area in which you are interested. There are a lot of dimensions of each stream. Please select your area in which you are interested. Let us say I'm going for business and management. Okay, these are the journals for business and management. And then refine your areas: human resource management, international business, marketing, advertising, operations management, strategic management. In which type of management you want to pursue your research? This is the, please note it down. I want all of you to note it down. Please write it down, that first narrow down your research area. Have you noted it down? This is a link I can share with you. Just give me a second. Okay, I'm sharing it with you. You can copy the link from here. I will also share it in the WhatsApp group. You can go to this side and specify your research area. After selecting the top 50 journals, are you able to see my slides? Are you able to see my slides? Yes. Okay, thank you. After selecting the top 50 journals, now just start reading one by one and make an Excel sheet. I am showing you my Excel work, but I have done for finding my research gap. Just let me open my Excel sheet. Are you able to see my Excel sheet? Yes, sir. Excel sheet. Yeah, I am just expanding it so that you will be able to read it. You can also make such kind of Excel sheet, and it will be helpful for writing your research papers as well, and to find your research gap. See, firstly, I was just going through the literature, and there are many broad areas. This is the mistake that I have done. I have read papers of all areas: fintech, internet banking, mobile money, mobile wallet, mobile Paytm, normal banking, others, theories. That's why it takes a lot of time for me to go through the literature review. In the starting itself,
you first find out what are the discipline areas you have, and then just find the meaning of each one. What, let us say I'm taking management, so search for what is financial management, what is human resource management. So search for them and then find your interesting area ki okay, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है. Let us say you have read some subjects of financial management, आपको अच्छा लगता है. From there you can narrow down कि हाँ यार, I will stick to financial management. इसके अंदर डीप जाएंगे हम, इसके अंदर डीप जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल, आप डायरेक्टली समुद्र में कूद जाओ तो तैरना नहीं सीख, डूब जाओगे. इसीलिए सबसे पहले आपको ट्रेनर चाहिए. बिल्कुल थोड़े पानी में तैरना सीखोगे, धीरे धीरे पूल में जाओगे, धीरे धीरे नदी में जाओगे, फिर समुद्र में जाओगे. डायरेक्ट समुद्र में जाओगे कुछ भी नहीं पता लगेगा. इसीलिए सबसे पहले नैरो डाउन करो ब्रॉड एरिया को, उसके बाद उसपे जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको किस में जाना है. आफ्टर देन लेट अस से दिस इज द फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू. ईयर कौन सा है इसका, सीरियल नंबर, ईयर. टाइटल ऑफ द स्टडी, टाइटल कौन सा स्टडी का, कंट्री कौन सा, एंड सैंपल साइज को. सी ये मैंने जो हेडिंग्स हैं ये अपने हिसाब से जो मुझे नीडेड था उस हिसाब से बनाई है. मेजर हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ. यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. ईयर, इट इज मस्ट, ईयर इज मस्ट. टाइटल ऑफ द स्टडी इज मस्ट, यू कैन राइट इट डाउन. कि आपको एक्सेल में आप क्या क्या चीजें यू नीड टू मेंशन. टाइटल ऑफ द स्टडी इज मस्ट. ओके, कंट्री, you can mention country. Don't write sample size at this point of time. You can mention country. After then, see, I have included a lot of things here, a lot of things, but it takes a lot of time. For saving your time, see, don't write objectives. Just write what is the purpose of that study, what was the research gap they have. I will let you know how to read a research paper and how to find a gap in that paper. So just make a heading of what is research gap. After then, add one heading of limitations and one heading of future scope. Limitations and future scope. After then, add, this is the most important point, add the word of keywords. Please jot down the keywords they have taken in their paper. Let us say here, there are a lot of keywords, you can see. Lot of keywords. These are the variables they have taken in that paper. This is the one paper. This is the variables they have taken in the second paper. So just write down the keywords they have taken for their study, so that these keywords will help you to search for similar kind of papers. Yes, also write the authors as well. Authors, because जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे फॉर एंटरिंग इनटू पीएचडी, दे विल आस्क यू कि किस ऑथर का आपने क्या पेपर पढ़ा एंड व्हाट फाइंडिंग्स दे गेट और व्हाट वर देयर रिसर्च गैप्स. ऑथर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं. नॉट फॉर द दोज हु आर राइटिंग सिनॉप्सिस, नॉट फॉर दोज हु आर राइटिंग देयर थीसिस, ओनली फॉर दोज who are about to enter into PhD. Okay, so आप ये Excel बना सकते हैं. मैं आपको, I'm just showing you the example. This is the title of the study. Okay, country and sample size. They have, this is a systematic literature review. So they have taken multiple countries. Over 130 research papers they have taken. This was their objective. This was the conclusion. No, you don't need to write the conclusion. You just need to write the limitations and future scope. Limitation and future scope, and write down the keywords as well. So once we are done with the top 50 journals, please open the journal, read the take the recent volume. Okay, let me take you an example. मैं आपको example से सिखा ही देता हूँ कैसे करना है, so that आपको दिक्कत ना आए. Okay, this is the IBTC list. Fine. Now, let us say I am taking this Academic of Management journal A star. This is the journal I am taking. I copied the name from here. I go to Chrome. Please let me know if my screen is not visible. I type Academic of Management journal.
You can see the publisher is Academy of Management. Yes, Academy of Management. Open it. This is how the journal looks like. There are, see, quick links, in-press articles, current issues, dynamic edition, archives, author resources. There are a lot of links have given to you. See, हमने क्या बोला था कि रिसर्च कैप ऐसा होना चाहिए that which is very new, जिस पे रिसर्च ना हुई हो या बहुत कम हुई हो, and which is relevant to the society in today's time. लेट मी टेल यू कि ये जर्नल्स हम क्यों रीड कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इनके अंदर ओनली एंड ओनली दोज पेपर्स आर एक्सेप्टेड दैट आर वेरी रीसेंट टू दी सोसाइटी. जो यूज टॉपिक्स हैं, sorry, these journals will not accept any research paper which topic is very normal or very common. They will accept only the very different topics or very different perspectives. इसलिए हमको यहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं कि अभी रिसेंटली मार्केट में क्या चल रहा है. That's why we are referring to these journals. और कोई रीजन नहीं इन जर्नल्स को देखने का. सेकेंडली, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी जो ऑथेंटिसिटी है बहुत अच्छी होती है. दैट इज व्हाई वी आर रेफरिंग टू दीज जर्नल्स. लेट अस से अभी मुझे सिनॉप्सिस बनाना है या फिर मुझे अभी रिसर्च प्रपोजल बनाना है. सो मैं क्या चाहूंगा कि भाई बिल्कुल रिसेंट टॉपिक लेके जाऊं. सो सी हियर, करंट इश्यूज मींस रिसेंट इश्यूज. I go to current issues. Okay, this is the issue. In-press current issue for the editors. See, for these articles I have no access because there are a lot of categories which are paid, which are free. Let us see, these are the names. सबसे पहले क्या होगा, जब आप इन टाइटल्स को पढ़ोगे ना, इन टाइटल्स को पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा. ट्राई करते हैं. डू आई डेयर? द साइकोडायनामिक्स ऑफ एंटिसिपेटेड इमेज रिस्क, लीडर आइडेंटिटी एंडोर्समेंट एंड लीडर इमर्जेंस. बीइंग न्यू टू द रिसर्च, मुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा. और देखते हैं, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन और ऑल इन वन, द रोल ऑफ नेटवर्क सीक्वेंसिंग इन द इलेबोरेशन ऑफ आइडियाज. थोड़ा सा कुछ पता लग रहा है कि रोल ऑफ नेटवर्क सीक्वेंसिंग, मतलब नेटवर्क सीक्वेंसिंग को यूज करेंगे इन इलेबोरेटिंग आइडियाज, बट और कुछ नहीं पता लग रहा है. पे ट्रांसपेरेंसी एज अ मूविंग टारगेट, अ मल्टी स्टेप मॉडल ऑफ पे कंप्रेशन, आइडियल्स एंड कलेक्टिविस्ट शेयर्ड वैल्यूज. सी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया. ऐसा होगा, सबके साथ होता है, बट आपको थोड़ा सा टाइटल से पता लगाना है कि क्या ये आपको थोड़ा काम का टॉपिक है. लेट अस से, मुझे लग रहा है कि यार अच्छा इसमें लिखे एंटिसिपेटेड इमेज रिस्क, लीडर आइडेंटिटी एंडोर्समेंट, ऐसा मैंने कुछ सुना हुआ है. मुझे लगता है कि ठीक है यार, देखते हैं एक बार. ओपन दिस वन, ओपन दिस वन. सबसे पहले यहाँ पे होगा एब्स्ट्रैक्ट. ये हर एक पेपर का होगा आपके पास. एब्स्ट्रैक्ट मींस उसने आपको 10 लाइन में बता दिया कि व्हाट डज इट मीन. 10 लाइन में ही इज टेलिंग यू कि पूरे पेपर में उसका ऑब्जेक्टिव क्या था एंड व्हाट सॉल्यूशन ही फाउंड. प्लीज रीड दिस वन, रीड दिस वन, और समझो कि ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है कि नहीं है, फिर इसमें आपको कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा. इन केस अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रीड दिस लेवल ऑफ इंग्लिश, अगर इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम है, देन यू कैन डू वन थिंग. यू कैन कॉपी दिस वन, open the chat GPT and ask him to write it in a simple language. I'm asking to you guys, is the chat GPT visible to you? Yes, sir. Okay, fine. So visible. Yes, sir, but I'm getting confused little bit. You were talking about the literature review, right? Yes, ma'am. And after literature review, you were saying about the journals. So can you please tell us the steps, like if we'll go for literature review, the first step for finding the research problem, then first of all, we have to define the area, like marketing management, HR Yes. management, right? Yes. And then we have to find out the top 50 journals, Yes. right? Yes. And then from top 50 journals, we have to firstly find out the area of interest in which we have to do PhD.
before you see, that's why you need to find some, we are searching for something new so that we can search for a new topic. See, we have defined the area. Let us say in management, I am going for human resource management. Then search for the top 50 journals in human resource management only. In human resource Okay, management. and then Yes. Then. and then I have Yes, please. Please say, ma'am. and then we have to note down the topics, right? Like titles we have to note down, and then we will see that what is our interest Yes. or what the recent research is going on, and then we have to make the Excel sheet, right? Yes, this could be a one step. This we are learning, this could be a one step. Okay, this is the first step, and what I have said is the actual steps that we have to follow. No, these are the actual step I am telling you. See, there are a lot of ways to find a research gap. So this is the first way through which we can find a research problem. Okay, so Yes. so I want that please for finding the research gap out of the literature, like you are saying, please tell us the steps, or in the group you can send us the message that what are the steps for like Go for first it. of all we have to go further. Yes, sure. I will write down the each and every step, no issues. But we will go for the other steps as well. Yes, sir, we will go, but I was getting confused in this. Like, first of all, we have to make an Excel sheet, or we have to find our topic. Oh, because it will take a lot of efforts. It will take a lot of efforts to make one Excel sheet, and then we'll say that we are not going to do research on this particular topic, right? So that's why I was asking that first of all we have to define our area, right? Yes, then define our area, then open the journals in that particular area, then to search for the topics which are currently in existence or recently in existence. Oh, yes. Okay, sir. Okay, so please share these steps in the group. Sure, ma'am. Better you can also write, take notes, jot down notes while we are taking class. Yes, but for your convenience, I will also write down this stepwise approach. No issues. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, ma'am. So if you are not able to understand this abstract, please write down. To you see, again, ChatGPT is also like Google Scholar. Google, it's again a platform. It's an AI platform. You just need to give instructions to him. Just give him the instruction that interpret this in very easy and simple language. Simple. So what he will do, he will interpret the same in very simple language so that you will be able to understand this paper, that what this paper is telling about. What this paper is telling about. So from this is the first step, that go to 50 journals. First select your area, go to 50 journals, write down, just search for the new topics. Now I can also explore the other topics in this area. So this was the first topic which I explored. Again, let you know, it will need patience and time to explore the original research gap. To take the original research gap. In the same way, I can also find out the other research papers, and can from the title itself, I can identify if this interests me or not. If you're not able to understand the title, then open it, read the abstract, and then refine it. Using this approach, if you go to 50, 60, 100 articles, you will have a list of at least 10 interesting areas within that specific area. Let us say in human resource. Now, after in human resource, after reading, let us say 5 or 10 journals, volumes of 10 journals, then you will have 10 to 15 areas where you can move. हम सी अभी ये भी हम ऊपर ही सेलेक्ट कर रहे हैं कि टॉपिक क्या होगा. अभी इसके अंदर फिर डीप लिटरेचर रिव्यू करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? अभी जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
and they are linking it with novel research opportunities. This is one of the area. इसके अंदर कितनी रिसर्चेज हुई हैं, इसके रिलेटेड कितनी रिसर्चेज हैं, अभी नहीं करूंगा मैं. पहले मैं 15-20 टॉपिक्स निकालूंगा, देखूंगा कि उनमें से कौन सा मेरे को इंटरेस्ट कर रहा है. देन आई विल चेक कि यार ये जो एरिया है ये कितना एक्सप्लोर्ड है. आई विल चेक इट ऑन गूगल स्कॉलर. वी विल डू इट लेटर, how to check the novelty of a topic. Then I will read articles related to only this specific area. फिर हम इसी के अंदर 20, 30, 40 पेपर पढ़ेंगे ताकि हमें उसकी अच्छे से नॉलेज हो जाए और हम अपने रिसर्च के अच्छे से निकाल सकें. Okay, this is one of the option you can find a research problem using the help of literature review. एक चीज इसमें रह गई very important. मैंने आपको एक्सेल में बताया कि you need to write down the future scope and limitations. हर एक पेपर की future scope and limitations होती है. Let me tell you कि होती क्यों है ये. See, research means कि आप रिसर्च कर रहे हो बट यू आर ऑल्सो शोइंग डायरेक्शन कि अगले वाला अगर आपके टॉपिक को रीड करेगा नेक्स्ट रिसर्चर तो उसमें वो आगे इसमें क्या एडिशन कर सकता है. दैट इज वाई हर एक रिसर्च पेपर में हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि देयर आर इन द लास्ट देयर इज वन हेडिंग लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप. लिमिटेशंस मींस अभी मैं इस रिसर्च में क्या नहीं कर पाया, एंड फ्यूचर स्कोप मींस अगला बंदा जो आएगा नेक्स्ट पर्सन विल कम वो इसमें क्या एडिशन कर सकता है. एंड जो अच्छे पेपर्स होते हैं गुड क्वालिटी पेपर्स उनकी जो लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्कोप है वो बहुत 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 रेलेवेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं. सी जैसे एक नॉर्मल रिसर्च पेपर है वो लिमिटेशन या क्या देगा, वो बोलेगा कि वी हैव कंडक्टेड अवर स्टडी इन इंडिया, द फ्यूचर स्कोप द फ्यूचर रिसर्चर्स कैन कंडक्ट इट टू अदर कंट्रीज. और क्या बोलेगा that our study is have conducted at one point of time so the other researcher can do it a longitudinal study. ऐसा बोलेगा. या बोलेगा कि our sample size is restricted to only one state, you can increase the sample size. or they will give कि we have used the analysis of SPSS, other researchers can use the other higher advanced tools. See, ये जो रिसर्च ये जो limitations है, ये जो future research scope है किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है. ये तो हर किसी में लिखे होते हैं. बट जो अच्छे पेपर्स होते हैं वो सच में बताते हैं कि आप अगला रिसर्चर वहां से क्या आइडिया ले सकता है और किस चीज में अगर रिसर्च कर सकता है. दैट इज व्हाई लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च स्कोप से ही आप लोगों का जो है रिसर्च क्वेश्चन निकलेगा. सी मेरे साथ पता है क्या हुआ, when I made 70 literature reviews. ये एक्सेल में मैंने 70 पेपर्स को रीड किया, अराउंड मोर देन 70, 80-90 पेपर्स आई रेड. मैंने पूरा एक्सेल बना लिया. आफ्टर मेकिंग दिस एक्सेल आई वेंट टू माय गाइड डॉक्टर गुरचरण सिंह एंड शोड इट माय वर्क. तो मुझे लगा था कि इतना सारा काम करके गया हूं तो शाबाशी तो मिलेगी, कुछ अच्छा तो होगा. एंड ही टोल्ड मी दिस इज वेस्ट, कुछ भी नहीं है इसमें. Unless and otherwise you put your mind into it. Let us say एक पर्सन ने लिखा कि मैंने ये स्टडी करी इन वेरिएबल्स को लेके. Now you think, he told me, now you think कि अगर मैं इसकी जगह पे होता, if I am in place of this researcher, मैं इस स्टडी को कैसे करता, क्या मैं इसको किसी दूसरे तरीके से कर सकता था. So from there you can find your research problem. Second way, read the limitations. Limitations को read करो and think on it कि क्या इस चीज पे काम हो सकता है या उसमें एक दो चीज एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हम उस पे कुछ और काम कर सकते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं उस चीज को. जब तक आप अपना माइंड उस पे अप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, these reading the research papers will not help you out. And the next day मुझे ये काम करने में अराउंड 2-3-4 महीने लगे. But when I met him, he told me, please apply your mind to it and think like this. The next day I found my research problem. उसके बाद एक दिन लगा मुझे सिर्फ अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने. So again, you no need to have 70 literature reviews, 60 literature reviews.
just have 20-30. If you are you are doing your synopsis, just read 20 to 30 papers, read, but do it like this कि आपके mind में छप जाए. There's a one technique to read research paper. When you're reading a research paper, please write it down. Write down the title of the topic, write down the name of the journal, write down the research cap, write down the important learnings you take from introduction and literature review. We will teach you how to read a research paper. After then, it will give you a lot of clarity on the conceptual basis कि उसमें थ्योरी क्या यूज हुई है, उसमें बेसिक्स क्या लिया, इंट्रो में क्या लिया, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या लिया उसने, एंड राइट डाउन दी डिस्कशंस एंड दी लिमिटेशंस एंड फीचर्स को. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. लिखने की कला जो है ना आपके दिमाग से, यू कैन लिसन, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट आप बिना समझे लिख नहीं सकते हैं, आप बिना समझे सुन सकते हैं, आप बिना समझे बोल नहीं सकते हैं, और बिना समझे लिख नहीं सकते. So before writing it down, you need to understand it. Okay? This is one of the way, using literature reviews, we can find our research problem. Okay, till now, is there any question to your mind? Please then. Till now, any question to your mind? You can ask me. सर आई हैव वन क्वेश्चन. Please, Harpreet. जैसे आपने बताया कि अभी हमने कोई टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना, हमने जस्ट रैंडमली 15-20 या 25 समथिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं. हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलिए हाँ एक बार. जी. जैसे सर आपने बताया कि हमें 15-20 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, तो हाँ जी. हमें अच्छे लगे या हमने अपने गाइड से डिस्कस किए, तो हम्म. जो ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो उनका जो आरएल होगा, जो पीछे से स्टडीज चलती आ रही है, मतलब जो कंटिन्यूएशन है, वो लिटरेचर भी हम कैसे मतलब जनरेट करेंगे, वो उसका क्या प्रोसीजर है? मतलब आप कह रहे हैं कि आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया. जी, मुझे एक अच्छा पेपर मिल गया, मतलब इसमें काम हो सकता है. हम्म. यस सर. फाइन, तो उसके ऊपर कैसे लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करेंगे? यस यस यस, जो काम हो. हरप्रीत, उस टॉपिक को सर्च करो गूगल स्कॉलर में, पेपर साइट किए होंगे, साइटेड बाय 6, 7, 10, 15. यू रिमेम्बर? यस यस सर. हाँ, तो वहीं से तो उस टॉपिक को सर्च करो. पहला तो ये हो गया कि साइटेड बाय किसने साइट की है, यू कैन गेट द लिटरेचर. सेकंड, उस पेपर ने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, उन कीवर्ड को गूगल स्कॉलर में डालो. You will get the papers related to those keywords. Okay, thank That are the relevant research. That's why I'm telling you to write down the keywords. उसका हेल्प ही यही है कि आप, अगर आपको टॉपिक पसंद आ जाता है, तो उस पर लिटरेचर आगे कैसे फाइंड आउट करना है, that those keywords will help you out only. See, keywords पता है क्यों रखते हैं? Yes. Let us say I have written a very good quality research paper, but उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो आप लोगों तक ना पहुंचे, मीन्स पब्लिक को रीच ना करे. तो जब पब्लिक सर्च करेगी उसको, तो मैं चाहता हूं कि भैया मेरा पेपर उनके सामने जाए. तो पब्लिक अगर सिर्फ कीवर्ड सर्च करेगी जो मेरे पेपर में है, तो ही उनके सामने जा पाएंगे. दैट इज वाई मैं अपने पेपर में ऐसे कीवर्ड्स रखूंगा जो पब्लिक सर्च करती है. तो कीवर्ड्स का रोल ये है, ऑथर अपने पेपर की जो है, जो पहुंच है, वो औरों तक पहुंचा सके. दैट्स वाई दोस कीवर्ड्स आर केप्ट इनटू दैट रिसर्च पेपर. अभी हमें उल्टा करना है. अभी हम पब्लिशर नहीं है, अभी हम जो है रीड कर रहे हैं, तो हमें कीवर्ड्स के थ्रू ही सर्च करना है, ताकि हमको वही पेपर आए जो उस कीवर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेपर्स है. ओके ओके, फाइन. एनीवन एल्स टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? सर, आई हैव अ क्वेश्चन. प्लीज मैम. आपने कहा कि क्वालिटी पेपर्स रीड करने हैं. क्वालिटी मींस मैम, हैव यू अटेंडेड आवर सेशन कि हम जर्नल्स की क्वालिटी कैसे देखते हैं? A star, A, Scopus, Web of Science. Have you attended that session? हाँ जी. यस मैम, उसमें हमने आपको समझाया था कि जो ABDC लिस्ट ऐसी, आप मैम आपकी स्ट्रीम कौन सी है? कॉमर्स.
कॉमर्स में, सब सोशल साइंसेस से हैं। तो आपके पास तो डायरेक्टली एबीडीसी क्वालिटी लिस्ट है। अब एबीडीसी लिस्ट मैंने शेयर करी है, पीपीटी जो आपने शेयर करी है, दैट इज हाइपरलिंक अटैच टू इट। उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा वो। आप वो लिस्ट को डाउनलोड करिए, उसमें ए स्टार और ए का फिल्टर लगाइए एक्सेल में, और उसमें अपने जो कॉमर्स के हैं मैनेजमेंट के जर्नल्स को सर्च कीजिए। दैट ए स्टार ए ऑल्दो बी कैटेगरी के भी क्वालिटी दे ऑल आर क्वालिटी जर्नल्स। ओके, डोंट रीड थैंक यूजीसी केयरलेस जर्नल्स। एबीडीसी में से कुछ भी रीड करो, दैट आर क्वालिटी जर्नल्स। यू। ओके सर, थैंक यू। सो ऐसे ही अलग अलग स्ट्रीम में, आपके अलग अलग स्ट्रीम में, अगर आप मैथ्स के हैं, लॉ के हैं, मेडिकल के हैं, आप सर्च कीजिए टॉप 50 जर्नल्स, दे ऑल आर क्वालिटी जर्नल्स। अभी मैंने आपको लिंक शेयर किया व्हाट्सएप इसमें चैट बॉक्स में, उस लिंक को ओपन कीजिए, दे ऑल आर क्वालिटी जर्नल्स। उसमें अपनी स्ट्रीम को नैरो डाउन कीजिए। So this was one of the point how we can find our research problem. See, आप लोग please, when after the session, please go find out your top 50 journals, make your Excel, try to read some papers, and कल जब आएंगे try कीजिए at least 2 papers को आप read करके आए। Problem आएगी आपको, ask me the problem you are facing. Ask me the problem you are facing. और क्या options हैं आपको research problem find करने के? Talking to experts in your field could reveal that there is a need for research on which topic or area. See, let us say मेरे पास experts का access है, कुछ experts हैं जिनको मैं जानता हूँ, let us say RBI में कोई है, उनको मैं जानता हूँ, let us say banks में कोई branch managers हैं, उनको मैं जानता हूँ, है ना? They are into the field, they're into the practical field. So उनसे बात करके मैं I can talk to them and वो मुझे बता सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम ना हमको आती है। लेट अस से कोई बैंक मैनेजर है, राइट, मेरे लिंक में, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ओके आप लोग लोन्स देते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? तो ही विल शेयर विद द रियल प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ही विल शेयर द रियल प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। सो आप उनसे बात करके, कुछ एक्सपर्ट्स हैं आपकी फील्ड्स के, उनसे अगर एक्सेस हो सकता है, कुछ है आपके पास ऐसे लिंक्स, तो उनसे बात करके स्टडी, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करके यू कैन गेट डाउन, कि उनसे बात कर सकते हैं कि सर अच्छा आपको इस चीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेटर से लॉ की बात करें तो आप जजेस से बात कर सकते हैं कि सर सुसाइड से रिलेटेड आप क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजन देने में, या क्या इश्यूज आते हैं अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं तो, है ना? तो आपके जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं एंड आस्क देम कि व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन एक्चुअल, सो दैट आपकी रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअल हो सके। उसके बाद personal experiences, let us say see I have worked in corporate for 2 years. I have worked in corporate for 2 years and I know कि corporate culture में क्या प्रॉब्लम आती है। लेट अस से बेसिकली आप लोग में से जो भी लोग जॉब करते होंगे कॉर्पोरेट में, स्पेसिफिकली किसी भी फील्ड में, है ना, टीचिंग में इशू नहीं आता है, कॉर्पोरेट में आता है कि मैनेजर्स को डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कॉर्पोरेट में कहते हैं कि मैनेजर्स है ना, मैनेजर्स अगर आपकी उनसे बनती है ना, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब दे आर दी हेड, अगर उससे अच्छी बनती है तो सब अच्छा चलेगा। इफ यू आर नॉट हैविंग गुड लिंक विद योर मैनेजर, आपके लिए कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सो लेट अस से मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आती है एंड आई कैन स्टडी बिहेवियर्स ऑफ मैनेजर्स और एम्प्लॉय मैनेजर्स रिलेशनशिप्स, उनके कैसे बिहेवियर्स होते हैं, कैसे एम्प्लॉयज है उनकी अच्छी बनती है मैनेजर से, कैसे एम्प्लॉयज है उनकी अच्छी नहीं बनती है मैनेजर से। सी दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, सो आई कैन सर्च ऑन दिस। सो जो लोग इंडस्ट्री में है, जो लोग प्रैक्टिस में है, यू कैन टॉक टू देम एंड, और अगर फिर आपने खुद एक्सपीरियंस की है, लेट अस से आप टीचिंग में है एंड यू नो कि टीचिंग में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कि जैसे टीचिंग में प्रॉब्लम आती है कि इफ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी, you have bachelor's, you have master's, but you are not getting a good job. You don't have that corporate flavor in your knowledge, right? आपको जो corporate demand कर रहे हैं वो आपके पास नहीं है। तो this is the major challenge. So you can work on this one कि क्या
एजुकेशन पॉलिसीज में फर्क है, क्या टीचर्स के एटीट्यूड में फर्क है, क्या स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में फर्क है, कि ये प्रॉब्लम, ये गैप कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। जस्ट गिविंग यू ऐसी आइडिया ही तो है रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ऐसा थोड़ी ना कि सोना है और ढूंढना है उसको, आइडिया ही तो है। और आइडिया कहाँ से आएगा? अपने माइंड से आएगा। तो इस दिमाग को चलाओगे तो बहुत इजीली आपकी रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, consultation with your supervisor. See, if you are into PhD, this is recommended to you all. If you are into PhD, writing synopsis, writing PhD, writing thesis, please consult your supervisor कि उनका क्या विचार है इस चीज पे। कई बार जो रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं दैट इज फाइन, वो तो ले सकते हैं कुछ भी। उनके लिए भी बताऊंगा कि उनको किस एरिया पे काम करना चाहिए, विल लेट यू नो। बट सबसे पहले बताऊंगा कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं पहले अपने गाइड से पूछ लें कि सर मैं खुद अपना टॉपिक ला सकता हूँ, और या फिर आप बताएंगे कोई टॉपिक मुझको। बिकॉज सम सुपरवाइजर आर रिजिड ऑन दिस, लाइक मेरे केस में ऐसा नहीं था। माय गाइड टोल्ड मी कि आप अपनी तरफ से कुछ भी टॉपिक ला सकते हैं। मैं 3-4 टॉपिक लेके गया उनके पास, वन ऑन स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट एजुकेशन, वन ऑन बिहेवियरल फाइनेंस, after then I get to technology one. But आपके प्रोफेसर का क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज मेक श्योर कि पहले ही आप उसको उनके साथ एक डील कर लें कि सर कैसा रहेगा, कि मैं अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक ला सकता हूँ या फिर आप मुझे बताएंगे। क्योंकि कई सुपरवाइजर्स रिजिड होते हैं कि नहीं आप इसी टॉपिक पे पीएचडी करोगे। तो ये क्लैश ना हो, या फिर आपका अगर अलग इंटरेस्ट एरिया है, गाइड का अलग इंटरेस्ट एरिया है, तो ट्राई टू मेक अ कॉम्बिनेशन कि सर ऐसा आप अपने टॉपिक को उनके टॉपिक के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं, ताकि आपका बात भी रह जाए और उनकी बात भी रह जाए, आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा उससे रिसर्च में। ऐसा भी पॉसिबल है। Funding agencies proposal. See, there are lot of research agencies who fund you. फंडिंग एजेंसीज क्या करते हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि सीकिंग फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट, सी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं थ्रू गवर्नमेंट एज वेल, थ्रू प्राइवेट एजेंसीज एज वेल। वो आपको फंड कर, लेट अस से 6 months का रिसर्च प्रोजेक्ट है एंड दे आर फंडिंग यू 10 lakh rupees, but they will specify, mention you, this is the problem, this you have to solve, this way you have to, they have a proper defined methodology कि आपको ऐसे सैंपल कलेक्ट करना है, ऐसे एनालाइज करना है, ये चीजें आपको गो थ्रू करनी है। सी ऑलरेडी उन्होंने एक आपके लिए रिसर्च मतलब ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। यू कैन रीड दोज प्रपोजल्स। अगर आपको लगता है कि दैट, सी वो प्रैक्टिकल तो है ये प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई दे आर पेइंग यू फॉर डूइंग दैट रिसर्च। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया for a year and government wants to do some hire some research scholars to do research on that topic, means that problem is really practical, that's why government is paying you that much money उस प्रोजेक्ट पे। तो आप उस प्रोजेक्ट की रिसर्च प्रॉब्लम देखिए क्या है, so that आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट की वो प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्टली एक प्रॉब्लम मिल गई है जो कि रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है लोगों के लिए। this could, मैं वही कह रहा हूँ ना, this could be one of the option available to you। पहला लिटरेचर रिव्यू, सेकंड हमने किया कि हम एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, थर्ड हमने किया हमारे गाइड से बात कर सकते हैं, फोर्थ हमने किया कि ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के या प्राइवेट के उनको देख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ areas from where you can find your research problem. This is last is analysis of current events or trends. See, ये चीज बेसिकली लॉ में जाएगी। लॉ में क्यों जाएगी? आप ऐसी बात नहीं है लॉ में जाएगी, सिर्फ लॉ में जाएगी, सोशल साइंसेस के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए भी है, लॉ के लिए भी है, बाकी अदर फील्ड्स के लिए भी है। लेट अस से यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज, आपको वहां पे लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, दिस इज द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। अब करंट न्यूज, करंट आइडियाज आते हैं डेली, यू गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर, सो दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। लेट अस से पहले मोबाइल फोन्स आते थे which gets discharged in 5, 6 or 10 hours, रियल प्रॉब्लम थी ये। नाउ देयर आर मोबाइल फोन्स, और वो चार्ज भी एक दिन 10 6 घंटे बाद होते थे। नाउ देयर आर फोन्स 15 minutes में 100% चार्ज एंड वो पूरा दिन चलते हैं।
प्रॉब्लम थी ना, वी गॉट सोल्यूशन। सी, सो आपके आसपास आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करके न्यूज में से कुछ ऑब्जर्व करके यू कैन फाइंड आउट योर रिसर्च प्रॉब्लम। लेटर से मुझे फाइनेंस में लॉ में दिक्कत आ रही है, तो लॉ में केस प्रोसीडिंग्स, अभी अभी मान लो किसी हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई प्रोसीडिंग्स दी है, किसी को किसी फैसले पे किसी केस पे अपना फैसला सुनाया है, बट यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस से आई टॉक टू वन टीचर इन द फील्ड ऑफ लॉ, एंड ही टोल्ड मी कि सर एक प्रॉब्लम है आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स का। पहले ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं था, अभी ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। सो डू वी मेक लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल? क्या हम इसको लीगल कर देना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन कि जो लिव इन में बहुत टाइम से रह रहे हैं, ही टोल्ड मी कि जब बहुत टाइम से रहते हो तो यू हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद इन अ मेल एंड फीमेल, even though they have not married to each other. So shall we consider them married? See, this is a research problem. क्या ऐसा करना चाहिए कोर्ट को? और the third research problem, let us say they have a baby in live-in. So shall we consider that baby as legitimate or illegitimate? Means that baby we should consider it as a legal one or an illegal one. Getting my point? This could be again मैं कह रहा हूं अपने आप को इस पे नैरो डाउन मत करना. This is a real life problem which we can see in around ourselves, our culture. So there are a lot of ways you can find a research problem, and the ways I have discussed. These are the points which we need to consider for writing a research problem. Again, ये रह गई है secret. I have bought this because I have taken an example of how a research. See, I have here taken examples of a secret, that how to frame a research problem. See, what is the effect of menthol flavor on the taste and sensation of cigarettes among young adult smokers? See, मैंने आपको बताया कि हम सोसाइटी को देख के, नेचर को देख के, we found a research problem. So if you know, one second, if you know, see, I am not a smoker, I have bought it for first time, but if you know, in a cigarette, see, in the filter part, there is a small bowl, and it has some flavor, menthol. And see, this I have bought. This is the flavor of wait a second, double burst. It's written double burst, icy and fruity freshness. See, icy and fruity freshness in cigarettes. Could you imagine? Now we can, before this, there were only simple cigarettes who were having no flavor, no mint, no icy, no fruity flavor. But someone, किसी को लगा कि अगर इसमें कुछ फ्लेवर आ जाए तो क्या वो जो सिगरेट की सेंसेशन है उस पे फर्क पाएगा? They researched for it and they found कि हाँ फर्क पाएगा. That's why now the cigarettes have that mint flavor, that icy flavors, that fruit flavors in the filters. See, ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं इसका एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ आपके सामने. रीजन बीइंग कि आप रिसर्च प्रॉब्लम साहब कहीं से भी निकाल सकते हो, बट वो सोचने का एक नजरिया चाहिए बस. अगर शांति से बैठ के, if you think for half an hour or an hour, definitely you will able to find a research problem around yourself. अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, read the research papers and then apply your mind on it. कि यार इसको मैंने जैसे बताया कि I go to my guide, there are 70 literature reviews. Then he told me, please use your mind on this. And when I used my mind, then I got my research problem. So this is today, we discussed that what are the ways to find a research problem. Hope the class goes smooth and you are able to understand the ways which we can find out the research problem. Tomorrow we will take a real life examples and learn about the properties of research problem, like
research problem should be clear, your research problem should be precise, your research problem should be feasible, a research problem should be achievable, research problem should be like that we can pursue that research with real life examples. Tomorrow we will cover that one. So in today's session, you can ask me any doubt. See, but one thing I would like to let you know, जब तक करोगे नहीं, sorry, कुछ नहीं मिलेगा. Although मैं आपको अगर मैगी बना के परोस भी दूं, still you have to pick that fork, to roll it up, to have it in your mouth, to chew it and to digest it. ये काम तो आपको करना पड़ेगा. Yes, any questions from your side? Any questions from your side? No questions for today? No, sir. Are you clear with the concept? Yes. Yes. Who was talking? She, ma'am. So, Yes. how is chat? Ma'am, your voice is breaking. You can type your question in the chat box. Your voice is Am I breaking. audible? Ma'am, your voice is breaking. You can type your answer in the chat. You can ask your question in the chat box. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Now you're audible. Now you're audible. Sir, how is chat GPT helpful in doing research? In research, Yes, sir. I mean, it's a tool. It depends upon you, how you make use of it. Tell me the particular aspect you're talking about, if any. So there's no like I'm not mentioning a particular aspect, but I'm just saying ki how can we make use of a tool like chat GPT or something like that. I mean, in order to carry out research with respect to like how can we find good quality research papers or like how can we write a good research article Okay, using this tool. with the See, help of ma'am, this tool? Yes. see, ma'am, the basis same. Firstly, you need to find out the research gap. Yes, if you see, the first thing I would tell you, don't believe in chat GPT. Always, it doesn't give the right answer. It doesn't give the right answer. And second thing, they will never say no to anything. Ask him any question which is impossible, he will give the answer. So that is why after searching on the chat GPT, use your mind whether this could be a possible answer or not. If your mind says yes, then believe on it, else not. First thing. Second, see, let us say you have find some keywords, let us say you have find some good research papers, you have been through around 10, 20, 30 research papers. After that, before that, it's not useful. Again, I'm saying you, once you are clear with the concepts, then you can ask me, even for finding a research problem, you can ask him. But the search should be specific. See, there are a lot of ways with which you need to use the chat GPT. I will try, if the time allows, to indulge it in this session, how to use chat GPT smartly so that they will not give you the wrong results. But again, let us say I have read 20 papers and I know what is the concept and I know what are the variables and I know what is the research gaps the other papers have taken. Now I can tell to chat GPT, write it that this is my area, this is what it means. These are some of the research gaps I have found and these are results there and these are the keywords there, and put your aspect. Now make a research problem in the context of, let us say, medicine, taking into account some of the aspects you want to add to your research. Then he will help you out, and he will help you out specifically.
But if you directly tell me some research problems in the areas of medicine research, let us say in the scientific research, he will just give you broad answers and sorry, that are not reliable. That are not reliable. Again, after doing the background work, if you go to ChatGPT, then definitely it will be helpful to you. But before doing the background work, you directly go to ChatGPT, it is of no use. It is not reliable actually. Any other question till now? Any other question? Or shall we end the class? Sir, I have a question. Yes, Neha ma'am. Sir, you didn't till now you didn't mention कि impact factor की range कितनी होती है, कैसे हमें पता लगेगा कि rank 10 is good one and rank 6 is Okay. Good question, ma'am. Thank you for asking the question. See, ma'am, okay, ma'am, could you tell me your specialized area, like commerce, management, or law? Which is your area? Sir, commerce. Commerce, ma'am. Okay, fine. Ma'am, one simple question to you. Could you tell me the range of what should be the current assets to current liability ratio? 2:1. 2:1. See, ma'am, this 2:1 we have been taught from our professor, from our guides. But practically, I have worked practically in Moody's. Let me tell you, that 2:1 is not for every industry. Not for it, it's just a normal one. If you, let us say, if you go to the real estate, there the ratio of current assets and current liabilities will be very different. Very different. If you go to medical field, where if a company is a pharmaceutical, there the current ratio to current assets to current liabilities very different. If you go to any other area, let us say steel industry, there the ratio of current assets to current liabilities very different, because one industry different from the other one. So the perfect answer is, see, the normal we take into industry is 2:1, but yes, it differs from the industry wise. This could be the answer, which is a relevant one. In the same way, see, I can tell you that impact score is 10 is the best one, and below 10 is the lowest one. Like it can range from 6 to 10, I can tell you. But again, there are a lot of students who are interdisciplined. Some are from law, some are from math, some are from commerce, some are from mathematics. So every discipline has a different range of impact factors. But yes, there is one solution to this one. If you are asking, just the link I have shared, you can click that, get out the list of top 50 journals in your stream, let us say commerce, and then there will be list with, just write down top 50 journals with their impact factor. You will get down the impact factor of top 50 journals. From there, हम लगा सकते हैं कि yes, अगर top journals का let us say impact factor 17 है, and वो range कर रहा है 14 to 17 के बीच में, means हमारी field में जो अच्छे journals है उनका impact factor around 14 to 17 रहेगा. अगर वो कम है 3, 4, 5 है, example, it's just an example again, 17 में example ले रहा हूँ. अगर वो 3, 4, 5 है या 7, 8, 9 तक है, तो that is not a good journal. अगर वो इस range के बीच में है जिसमें top 50 journals lie कर रहे हैं, it's a very good journal. Okay, fine. So I am ending the class now. Hope you understood all the concepts. And again, revision is the best policy. If you don't revise, you will not remember anything. Please go try the things which we have discussed yesterday, which we have discussed in previous classes. Bring up your doubts. I want you guys to bring up your doubts to me. If you don't bring your doubts, means you are not ready. You are not doing your work. You are present in the class, but you are not doing your homework. So do your homework, come back to me, ask your doubts, so that you will be get yourself out of the situation where you are stuck. Okay? So thank you guys. Thank you so much.